अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन मेरा स्टार्ट हो गया है। मैंने अभी जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया है और तैयार भी साथ साथ हो रही थी। आज हम लोग एक बहुत ही प्यारी सी जगह जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं। हमारे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी और मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे जाना। मैं हालांकि बर्मिंघम में इतने अरसे से हूँ पर मैं वहाँ कभी गई नहीं। तो आज वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने से पहले मैंने नाश्ता तैयार किया, तो मैं अभी आपको नाश्ते की एक छोटी सी झलक दिखा देती हूँ। आगे अपनी डेस्टिनेशन और आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम लोग आए हैं कैडबरी वर्ल्ड। तो बहुत बिजी है, टोटल सोल्ड आउट है, टिकट्स नहीं मिल रहे, प्री बुक करना पड़ता है यहाँ आने से पहले। तो अभी वो बाहर लिखा था कि अंदर जाएंगे तो टिकट्स नहीं मिलेंगी, तो अच्छी बात है, हम लोगों ने ऑलरेडी प्री बुक किए हुए थे और हम आ गए हैं। और ये देखें, कार पार्किंग में अभी कार पार्क की है, तो अच्छी फैसिलिटी बनाई हुई है कि यहाँ पे फ्री कार पार्किंग भी है, तो अच्छा सा हो जाता है। तो चलते हैं अंदर। जी तो क्यू में आ गए हैं, काफ़ी लंबी क्यू थी लेकिन ना फ्लो हो रही है अच्छे से। एज लॉन्ग एज आपके पास टिकट है तो वो आपको अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा बच्चे ही आए हुए हैं, पर मैं भी आया हूँ ना, एक बच्चा साथ आया है। हम भी बच्चे ही हैं, तो बच्चों की तरफ बहुत एक्साइटेड है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, इनका सेकंड टाइम है, तो देखते हैं अंदर क्या क्या है। क्यूरियस हूँ कि मैं तो नहीं आई हुई यहाँ पे, तो चलते हैं। तो यहाँ पे पहले अपनी टिकट स्कैन करवाएंगे हम। Got some gifts. बहुत ही अच्छा है, जंगल सा बना हुआ है। और ये देखिए, देखिए ये क्यूटी पाई। This is really
जिंदगी है भुगतानी शक्कर। बहुत मज़े का इन लोगों ने ये बनाए हुए हैं, बहुत नाइस। ये ऊपर से तो ये शिप बनाई हुई है ने, और नीचे से इसकी एंट्रेंस, और यहाँ पे भी ना ये देखें वो कितना प्यारा है। तो ये बेसिकली विशिंग वाइल्ड टाइप है ना, आप विश करें और यहाँ पे अपना कॉइन फेंकें, तो बहुत मज़े का बनाया हुआ है। जी, तो हम अभी वहाँ से जब गुज़रे तो वहाँ पे कुछ स्टोरीज़ बता रहे थे, काफ़ी लंबी हो जाएंगी अगर हमने मैंने अपनी वीडियो में डाली तो वैसे समझ मुझे कुछ नहीं आया। अभी भी यहाँ पे हैं, बहुत प्यारी ये जगह इन्होंने बनाई है, ये देखें। जी, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे प्यारी सी जगह बनाई है जहाँ पे टीवी है वहाँ ऊपर, और उसमें थोड़ी सी कुछ स्टोरी बताएंगे। 5 या 7 मिनट की स्टोरी है, लिखा है नहीं 3 मिनट रह गए हैं और 7 मिनट की स्टोरी है। तो दरवाज़ा आगे बंद कर दिया मैंने। बेसिकली यहाँ से ना हमें ये पूरा ये सुनना पड़ेगा, उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। कि चॉकलेट खाते हुए अभी हम जा सकते हैं, ये तो जी एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में आ गए, और यहाँ पे पता नहीं कुछ थिएटर टाइप लगा हुआ है, कुछ दिखाएंगे। तो ये मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए। Where I set up my business in 1824 to trade tea and coffee. I also sold cocoa nibs I prepared myself, chocolate and coffee beans. These drinks were considered as wholesome alternatives to alcohol, which we as Quakers strongly disapproved. In my spare time, I experimented with preparations of cocoa beans and chocolate, which I could sell in the shop. Soon I had to rent a warehouse in nearby Crooked Lane, where I could manufacture these products on a larger scale. At first, it was very difficult, because I had to pay high taxes on the cocoa beans. And then, on top of all that, I had to move out of Crooked Lane and into another factory, here in Bridge Street. That's when my brother Benjamin joined me, and together we formed Cadbury Brothers. With more space, we could now prepare a cocoa powder and an eating chocolate that could be packed and sold. Soon after, my eldest son, Richard, joined the company. Having Richard with us made all the difference. He saw to it that the quality of our cocoa improved, introduced new products, and even opened a shop in London. Our efforts were rewarded when we received our first royal warrant from Queen Victoria. That was when my younger son, George, joined us.
George introduced many benefits for the workforce, such as half-day holidays, a sick club, and many improvements in the factory. And Richard, your new designs for our packaging were a huge success. Well, we had to try something different, just to get ourselves recognised, Father, as we were still a small company. Our aim was to manufacture only the highest quality cocoa and chocolate. I know, and I could tell you some stories of less scrupulous producers who added brick dust to their cocoa. Ours was still gritty, but we only added sugar to take away the bitter taste and starch to absorb the fat. However, George had heard of a new kind of cocoa press. He went to Holland in 1866, saw the press being used and brought one back. The Van Houten Press. Oh yes, Father. You see, because we could extract more of the cocoa butter, there was no need for more additives. Not only was our cocoa essence more palatable, but also output increased. The Bridge Street factory was now too small to cope, and we had to expand somewhere else. For some time, George and I had shared the same vision to build our new factory in a garden setting, away from the smoke and grime of the city. We called our new factory Bourneville. We opened our new factory in 1879, and were faced with many more challenges as the size of our workforce increased. As the company prospered, we introduced bonuses, such as payment for output and punctuality, a 5.5-day week, pension schemes, works committees, training, and many other benefits. I sent my son George to Switzerland to find out how chocolate was made, using fresh milk. Soon after, Cadbury were able to manufacture chocolate with a much higher milk content that rivaled even the best Swiss products. That was when we launched our most important new brand. We called it Cadbury's Dairy Milk. It became so popular with its distinctive taste that sales exceeded all our best expectations. And within a short while, it had become our best-selling chocolate. In 1919, we merged with Fry, and the company went from strength to strength. And so we have seen that big things have their roots in the smallest beginning. Hello everyone, I please hope you enjoyed that. Do you want to mind listening to the safety announcement before you make your way through to the next part? People with medical conditions. तो एक जगह से निकल के एक और अब देखें थिएटर। यहाँ पे बेसिकली बच्चों के लिए ही है कि अच्छी हम भी बच्चे हैं पर थोड़ा सा ना बोरिंग हो जाते हैं बड़ों के लिए। हम लोग कुछ लाइक इंटरेस्टिंग इनोवेटिव चीज़ें देखने जाते हैं, तो चले अब देखते हैं। Our story starts over there, where you can see a farmer and his team planting our young cocoa trees. Hello there! Once each pod has been planted, it's cut open, so that all of the beans and sticky pulp can be scooped out to be fermented in a heap and then dried in the hot sun until they've turned a rich brown colour. Once the beans are dried, they are tested for their quality before being loaded onto a cargo ship to be transported to England. They are then taken to our factory in Chirk for processing. Now, first the beans must be sorted and physically cleaned to remove any stones, dust and string that have come across with the beans from Africa. This is done using a stream of air and by passing the beans over vibrating seals. The cocoa beans are now passed on. सीट्स हिल रही हैं। Green cocoa beans are now taken to be roasted. The beans are then cooled, ready to have their shells removed through a process called winnowing. This is done by passing the hitting them a shell is then blown away, and the remaining pieces of bean are called nibs. The nibs are now ground up in large mills. This process generates heat, which helps to transform the nibs into a thick chocolate-coloured liquid called cocoa liquor or mass. Some cocoa liquor is taken to our factory at Marlborough for further processing. The rest of the liquor is pressed to extract the cocoa butter.
The refined cocoa butter is now taken to Bourneville, where we will catch up with it later. Meanwhile, the cocoa liquor that has been taken to Marlbrook is pumped into storage tanks, ready to be turned into chocolate crumb. Over 150 tons of sugar and 500,000 litres of fresh whole cream milk are delivered to Marlbrook every day to be used in this process. But first, the milk must be pasteurised and then evaporated to remove most of the water before sugar can be added to produce a sweetened condensed milk. The liquid milk and sugar solution is now heated again before the cocoa liquor from Chirk is added and thoroughly mixed to create a thick paste. The paste is then squeezed between steam-heated rollers under a huge vacuum, causing the paste to turn into a powder. This, the cocoa butter, which came from Chirk earlier. The paste is then refined into a flake before being conched or mixed to form a liquid chocolate. This liquid chocolate is used to make all our famous milk chocolate products. फिर से हम कहीं और रूम में जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये था कि जो सीट्स थी वो हिलने लगी थी, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बेसिकली गलियाँ बनाई हुई हैं लाइक कॉरिडोर्स, और दोनों साइड पे ये देखें पिक्चर्स लगाए हुए हैं बेसिकली स्टोरी जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स हैं और दोनों साइड्स पे लगाई हुई हैं। कैसे पहले पुराने ज़माने में कैसे चॉकलेट बनाते थे, कौन सी मशीन यूज़ करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता ईयर्स कैसे ऊपर गए और प्रोग्रेसिव होते गए और कितने लाइक सक्सेसफुल होते गए। तो पुराने वर्कर्स की भी पिक्चर्स हैं, पुरानी मशीन्स की भी पिक्चर्स हैं यहाँ पे, तो जो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको दिखाती जाऊँगी। तो देखते हैं आगे और क्या क्या है। अभी पीछे पुरानी मशीन भी दिखाई थी नहीं, जो मैंने इससे पहले आपको दिखाई है कि पहले कैसे बना करती थी चॉकलेट, और अभी कैसे आगे शायद दिखाएंगे कि अब लेटेस्ट मशीन क्या है। What's wrong with that? Child.
What's gone wrong with us? A+S तो बना दिया ना। बहुत बहुत प्यारा है, दिल भी टेढ़ा है, एस भी उतने थले हुए है, थोड़ा सा मोटा भी हो गया लेकिन ब्यूटीफुल। बहुत चॉकलेट्स खाई और शाजिया ने बहुत प्यारी 2-4 चीज़ें बनाई हैं, वो आपको दिखाएंगे वीडियो के अंदर। और दिल बहुत प्यारा, मैं जब आप दिल देखेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आई गारंटी। क्या करूँ, पेंसिल तो थी नहीं तो उन्होंने वो बॉटल्स दी थी तो उसमें से चॉकलेट इस अंदाज से निकल रही थी, उसी अंदाज से मैंने ड्राइंग कर दी। इसी तरह घुमा के बैक साइड दिखा दें। जी तो अभी हम लोग एक कार राइड पे जाने लगे हैं, फन होगा। तो हम दोनों बैठ गए गाड़ी में और हम जाने लगे हैं। Welcome to Cadbury. Be careful, Peter. ये देखिए like a magical world of chocolate। बच्चों के लिए बहुत नाइस है, पर हम भी बच्चों से कम नहीं, बहुत फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गुजर रहे हैं ना, जैसे इन्होंने ये बनाया है तो सर्दी हो रही है। बच्चों के लिए स्पेशली ना, लाइक जैसे वाकई में कार्टून में आ गए हैं। तो जहाँ गर्मी थी वहाँ गर्म हवा छोड़ते हैं, जहाँ सर्दी थी
और सर्द हवा छोड़ते थे और हवा इज जस्ट ब्यूटीफुल। अभी जहाँ हम आए हैं वहाँ पे हम लोगों को चॉकलेट देंगे जो हम टेस्ट करेंगे। Hello. What would you like on milk and chocolate? Any two of these toppers? Could I just get the chocolate ones? For you? Thank you very much. Yeah. तो जी अभी हम अपनी चॉकलेट जो ली है उसका मज़ा ले रहे हैं। तो उसमें मेल्टेड चॉकलेट है और साथ में हमने चॉकलेट के जो बटन है ना वो डलवाए हैं। Yeah, good. Okay, so my name's Diego. Welcome to Chocolate Nation. I'm one of the chocolatiers here at Cadbury World. What we're doing today is show you how we make our handmade products. Okay, so today we've got two chocolatiers over in production. One, we have Mo and we've got Taylor. They're making our handmade products. So guys, we've got Mo who's making our flats, and we've got Taylor over there who's making some white chocolate lollies. Over here, this is going to be a lot of hard decorating. Okay, so you can see our decorate over there, Phoebe. We're going to be decorating all sorts today. What I'm going to do is show you how we make our smaller chocolates today, these little small ones here. Right, what we're going to do first is we're going to start with some melted chocolate. Okay, on the table. Upstairs, everyone have a go at hand tempering their chocolate. Spreading the chocolate out, we bring it all back together, yeah? Okay. So we hand temper the chocolate to help cool it down, to make the chocolate shiny, to make it sticky. Okay, so just like you did upstairs, we're going to spread the chocolate out nice and flat. Okay. Then what we're going to do is we're going to get our fish out and we're going to lift the chocolate up, raise it up. Okay, and what this is doing is adding loads and loads of air bubbles to your chocolate, that'll cool it down and give it a nice shine. There we go. Save it in. There we go. See the spirals in there, yeah? Okay, so if I spread my chocolate back out again, alright, you might be able to start to see the tiny air bubbles now start to form inside the chocolate. Right, that's a good sign my chocolate now will start to cool down. I can feel my chocolate getting thicker as I push it on the table. And you can see the chocolate getting a nice shine to it, and that's a good sign our chocolate is cooling down. And we're going to move on direction, okay? There we go, press it again. Okay, this chocolate now should be nice and cool and ready to put into one of our molds. Before we do put it into the mold, we need to test the temperature. There's a few ways you can do that. You can give the chocolate a nice little taste. So you can dip your finger in and place it at the back of your wrist if it feels nice and cold. Ready? What I like to do is I like to drizzle the chocolate on top of itself. If it sits on top, just like it's doing right now, it's going to sink it back down. You know your chocolate is nice and cool. Okay? Now what we do is we grab one of our plastic bowls, like this one here, place it next to our chocolate, fix them up, and just place it like that, okay? Give our chocolate a little split like the mould. Right. So if you do watch one of our chocolatiers over there, I think Taylor's doing it right now, she's tapping her mould on the edge of the table. Alright, the reason she's doing that is to get rid of all the air bubbles that are inside our chocolate, okay? While it's molding, when you start to see all them tiny holes within our chocolate, yeah? Our chocolate's got loads of holes at the bottom. We need to get rid of all the holes. So what we're going to do is give it a tap. Alright, you can start to see all the tiny air bubbles now coming up in the chocolate. Alright, so the bubbles, yeah? Right, if we go that way, you can start to see most of the holes are starting to disappear. Right, that's going to leave us a nice smooth chocolate at the end. Okay? At this point we can do two things. We can either make solid chocolates, so what we do here is we just scrape off the top and you've got solid chocolates. Or what you can do is you put a filling inside these chocolates, okay? So if you've got caramel, strawberry, orange, what we do is we take the mold upside down. Okay?
Alright, that's how you know you've tempted your chocolate properly, okay? The chocolate doesn't come out. As soon as you give it a tap on the table, give it a shake, out comes the centre of your chocolates. We call this chocolate rain or shelling. Okay? So what's happening is the centres of my chocolates are falling out, and it's going to leave you with room to put loads of different fillings in. Okay? Whatever you want to put inside your chocolates, you can put them in there now. Okay? Before you put a filling inside, because the chocolate is still liquid chocolate, we're going to let it set for 5 to 10 minutes over here. Here is one that we did do earlier. This one's starting to set now. What we do is we scrape off the top, just like that, okay? Chocolate is nice and set in the middle. When you put a filling in, it's going to rest nicely on top. Once you've got your filling inside your chocolate, what we can do then, instead of wasting all this lovely chocolate on our table, we'll gather it all back up, flip it back up, place it back on top, and this will just make sure the filling didn't go anywhere, okay? So it'll be a base layer of chocolate. So we've got one last one to spread you on pallet knife, and one last one to scrape. What I'll do now is put these in the refrigerator, take about 30 to 40 minutes for these to set. What I'll do is get some out of the video earlier and see what they look like when it's finally ready, okay? Here we go. Okay, so when we get our chocolates out, we're looking for them to be this nice dark frosty colour. And nice and dark at the back, that means chocolate's nice and set, and then it's ready to come out, okay? To get your chocolates out, it's really easy. You give it a little twist on the edge of the table. You turn it upside down and give it a tap. There we go. Out comes our nice shiny little handmade chocolate. So really easy to make. Feel free to come and have a little look at these chocolates in a bit more detail. You can pick them up if you want. Unfortunately, we can't give them out to you because we do just reuse the chocolate down here. Put these back in the machine over there and it's remount the chocolate over and over again, okay? Apart from that, guys, that is the end of my demonstration. Thank you all for listening. I'll be able to wonderful day and happy work. Thank you. Thank you. तो अब हम निकल आए हैं। अब यहाँ पे चॉकलेट्स हैं, यहाँ आप चॉकलेट्स बाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ईस्टर आ रहा है तो ईस्टर के एग्स हैं, ये देखें। तो फन है था, बहुत मज़ा आया। अच्छा बनाया हुआ है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मज़ा इनको आया। इसको देखें।
टेडी बेयर। आपको मज़ा आया? हाँ जी आया। अभी भूख लगी हुई है इसलिए अभी एनर्जी नहीं है बोलने की भी। थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ी सी जान आएगी, उसके बाद बातें करेंगे। और ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि बच्चों की जगह है, ऑब्वियसली बड़े ही लेके आते हैं बच्चों को। तो समझे हमारे साथ गायबाना बच्चे आए हुए हैं जो किसी को दिख नहीं रहे, लेकिन ये कि हम अपने बच्चों को ही लेके आए हैं। हाँ भाई बड़े भी इंसान होते हैं, घूमना फिरना पड़ता है मेरी। तो यहाँ पे कैफ़े भी है, ये देखें। तो अगर भूख लगी हो आपको बच्चों को तो आप यहाँ से खा सकते हैं, लेकिन यहाँ ना खाने के लिए आप कैश कार्ड जो है ना यूज़ नहीं कर सकते। एक ऐप है, कौन सी ऐप थी, हाँ ज़पेगो, और आप उसको डाउनलोड करें, उस पर ऑर्डर करें और उस पर ना पैसे दें और फिर वो आपका टिकट नंबर देंगे और फिर आप यहाँ से ले सकते हो। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट ओनली, और वो भी उस ऐप पे। तो हम अब निकल रहे हैं। मेन्यू देखा, इतना खास नहीं था हम लोगों के लिए, इतनी भूख लगी हुई है, ये तो नाश्ता भी नहीं होता हमारा। तो अभी बस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से हाँ फिर निकलेंगे घर। तो हम अभी निकले हैं तो इस गाड़ी पे नज़र पड़ी तो हमने सोचा इसकी भी बना लें। बहुत ही ये देखें चॉकलेट वाली है ये देखें बनता है, यहाँ आए तो इसकी तो बना ले ना बेचारी। गाड़ी बाहर खड़ी है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाड़ी को पूरी अपनी चॉकलेट्स एडवर्टाइज की हुई है। ये देखें ऐसे यहाँ से खड़े होके आप पिक्चर ले सकते हो इसके साथ। मैं भी लेती हूँ। तो जी हम निकल गए थे, लेकिन यहाँ ये देखें कोई 4D चॉकलेट एडवेंचर है यहाँ पे। तो हमने सोचा आए में तो ये भी तो देख लें। यहाँ पे मैंने देखा है आगे दिख रहे हैं कुछ फन सा हो रहा है, कोई फन फेज टाइप और सर्कस टाइप हो रहा है। तो देखते हैं क्या है आगे। और यहाँ से आगे से वही जा सकते हैं जिनके पास टिकट्स हो, लिखा हुआ है वहाँ पे। हमारे पास तो टिकट्स भी हैं, चलते हैं। इन्हें मिलके जाना है। Hi. We've got 5 minutes of fun left out here. This is great. That's it. Oh, he's a little bit of tap dancing. Oh, how do you do? Hello. How do you do? Lovely to meet you. Good. He's a very posh gentleman. Who can tap dance? Where did you learn that from? I bet you did. Thank you. You're welcome. Hi, thank you. Good job. Beautiful. तो जी बहुत मज़े की यह जगह है, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों के लिए एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी है। और ये जो अभी टैप डांसिंग कर रहा था बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही फ्रेंडली है यहाँ। और बाहर एक एरिया बनाया है ताकि आप यहाँ से कुछ खाने के लिए भी ले तो आप बैठ के खा भी सकते हैं। और ये देखें मैं आपको थोड़ी देर में ये सारा दिखाती हूँ। यहाँ से एंट्री है इस 4D की, तो हम चलते हैं अंदर, देखते हैं ये क्या है। तो आज हमारी किस्मत अच्छी है, इतना ज़्यादा वेट नहीं है, लाइन ही नहीं है। ये देखें, वरना बहुत ये लाइन होती है। अभी 20 मिनट का है। हाँ अभी लिखा है यहाँ से 20 मिनट का है। तो अभी हम जा रहे हैं 4D जो है मूवी वो देखने। And we are very excited, yes? Yes, yes, yes.
बहुत मजा आया। गाना आपको मजा आया? मेरा तो मन है कि 4D ग्लासेस साथ ही लेके चले जाएं। हाँ अच्छी थी जी। तो इट वाज वेरी फन। तो ऐसा लग रहा था बाकी में रोलर कोस्टर पर बैठे हुए। 4D बहुत मजे का था। 3D मैंने देखा हुआ है, ये 4D बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे रोलर कोस्टर नीचे जाता है, आपका दिल धड़म से नीचे जाता है। तो वो पूरी माइंड गेम होती है ना, देखें। अभी हम जा रहे हैं वापस, अब फिनिश हो गया और यहाँ पे भी फिनिशिंग टाइम हो गया है नेली। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो ये 4D का था। और अंदर जब हम वो क्या उस छोटी कार में बैठे थे और सब कुछ उन्होंने दिखाया था, मुझे उसका बड़ा वो मज़ा आया। आपको कौन सा आया? मुझे 4D का मज़ा आया, 4D सिनेमा का। हाँ। और उसके अलावा चॉकलेट खाने का बहुत मज़ा आया। हाँ चॉकलेट से दीदी के खा रहे थे तो नहीं, बहुत मज़ा आया। और 4D मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन वहाँ पे हम लोग वो जो ही अंदर जाते हैं ना, तो उन्होंने पहले लिखा था कि कैमरेज वगैरह बंद कर दें। और फिर जब कैमरेज बंद कर दिए, अपनी सीट्स पे हम लोग बैठे और वो जो सीट्स हिली और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप वाकई किसी थीम पार्क में गए हुए हो और एक रोलर कोस्टर में बैठ गए हो। तो जब वो रोलर कोस्टर खत्म होता है, आप नीचे जाते हो, तो वो बिल्कुल वही फील दे रहा था। तो समथिंग डिफरेंट। 4D पे मैं पहले बैठी हूँ, लाइक ऐसे सिनेमा जो मूवी देखी है, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाँ, आज का दिन बहुत हमने इंजॉय किया, हस्बैंड के साथ बहुत ही इंजॉय किया। अच्छी सी आउटिंग होगी हम लोगों की। तो अब मैं पूरी वीडियो ज़रूर लगाऊंगी, शायद थोड़ी सी लंबी होगी, तो ज़रूर देखिएगा। जो चॉकलेट लवर्स हैं, जिनने कैडबरी वर्ल्ड नहीं देखा हुआ, ये उनके लिए हैं। एंड यहाँ ज़रूर एक दफ़ा एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो ठीक है जी, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। फिर अगर आगे बनाई तो ठीक है, नहीं तो यहीं से अल्लाह हाफिज़ और फिर मिलेंगे। तो ओके।